अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तान इन पर्सपेक्टिव, जो कि स्पेशल सीरीज़ है जिसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। राइट नाउ अभी तक हम जो 3 एपिसोड्स रिकॉर्ड करवा चुके हैं, दैट इज़ वी आर एक्सप्लोरिंग एक्चुअली CPEC। लेकिन हमने ये पहले एपिसोड में बताया था कि CPEC को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड BRI, एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड BRI वी एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड चाइनीज़ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो पहला एपिसोड जो था हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था। दूसरे के अंदर वी डिस्कस्ड व्हाई चाइना नीड्स BRI, क्या उसको क्या ज़रूरत क्या पड़ी है, वो जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक क्या क्या वो कंसिडरेशंस थी जिसकी वजह से चाइना ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इन द थर्ड वन वी लुक्ड एट दी ट्रेड आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज ऑफ चाइना, और वो किस तरह चेंज हुए हैं पिछले कुछ सालों में और आगे कैसे चेंज होंगे। एंड नाउ इन द फोर्थ एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस द इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, द 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स ऑफ BRI, जिसके अंदर CPEC भी आता है। एंड टू डू दैट वी हैव विद अस सर बिलाल इलाही, हु इज़ अ फैकल्टी मेंबर एट द बिजनेस स्कूल एट यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू इसलिए दिया ताकि सबको एक रिवाइज हो जाए सर। तो अभी मैं सर आई वुड वांट कि मैं शुरू करूं कि 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है क्या पहले, फिर आई विल हैंड इट ओवर टू यू। अच्छा, वो रिगार्डिंग व्हाट वी डिस्कस्ड अर्लियर, जी, वो 2-3 चीज़ें हैं विच आई थिंक वुड बी यूजफुल टू कीप इन माइंड। एक तो ये कि इनिशियली इट वाज अनाउंस्ड इन 2013 जी, और उसमें $1 trillion were going to be spent, and this is basically a project to connect East China with Western Europe. राइट, Later on, it expanded into $8 trillion project, which was to cover 160 countries. राइट, So उसके लिए उन्होंने फिर to create focus, because every region, you're talking of such a huge area, every region has their own challenges, they've got their own objectives and their own needs. तो फिर ये 6 economic corridors were identified. राइट, ये जो 6 economic corridors है, हमारी जो पहली स्लाइड है आज, जी, इसमें ये शो हो रहे हैं। एक है China-Mongolia-Russia economic corridor. ठीक है, ये विल बी डिस्कसिंग दिस कॉरिडोर्स इन डिटेल। दूसरी है न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज। थर्ड इज़ चाइना सेंट्रल एशिया वेस्टर्न एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। फोर्थ है चाइना इंडो-चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो 1, 2 and 4 हैं, दे आर एक्टिव कॉरिडोर्स। राइट, ये जो 3 है नॉट एक्टिव, नंबर 5 बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार नॉट एक्टिव, 6 is what we are here to discuss today, कि इसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं। राइट, तो सर अगर हम पहले के ऊपर शुरू करें, सबसे पहले चाइना मंगोलिया रशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, Okay, so जिसका अभी मैप अभी स्क्रीन पे आ रहा है, तो इसके ऊपर अगर आप हम ब्रीफ करें व्हाट इट इज़ अबाउट एंड इसका पर्पस क्या है। Okay, so this was announced in 2014 राइट, as the STEP Road program, and this basically aligns BRI, which is a Chinese vision of in the future. जी, This aligns with what is called EAEU, Eurasian Economic Union, राइट, which is Putin's idea to develop their own version of European Union. ओके, So from that point of view, it was at that point, यानी जब ये बात की गई तो ये भी ख्याल था कि इन दोनों को इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, इस कॉरिडोर में बेसिकली द फोकस इज ऑन कमोडिटीज मूवमेंट एंड प्रिंसिपली इम्पोर्ट ऑफ गैस फॉर चाइना। राइट, अब ये देखें, हमने 2 इसमें डिफरेंट पॉइंट्स मैंने शो किए हैं। एक तो रशिया टू चाइना डायरेक्ट गैस पाइपलाइन, जी, क्या, और दूसरा रशिया टू चाइना वाया मंगोलिया। अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इफ़ यू लुक एट द मैप, तो मंगोलिया एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री टुडे, ठीक है, और that is Outer Mongolia. Inner Mongolia is part of China, but obviously ethnically it's the same groupings of people. So China is very cautious about what happens and very aware of what happens in Mongolia. राइट, तो इन्होंने initially जो pipeline थी later on, which was given a different name, Power of Siberia 1 कहा गया, लेकिन initially when this pipeline was laid, तो they avoided Mongolia. उन्होंने कहा हम डायरेक्ट इम्पोर्ट करेंगे, and that was not a very economical route. It was a longer route, but China wanted to bypass Mongolia
because firstly, this pipeline was going to be laid by Gazprom, financed by Gazprom, and also operated by Gazprom. So China thought that this would increase Russia's influence in one of their borderlands. Secondly, which is not very well known, is that Mongolia is also one of the 9 global partners of NATO. Right. Over the years, Mongolia has opened up with the US, and so there is this concern in China that at any time, under American pressure or under some change in Mongolian policy regarding Russia, they don't want the pipeline to be turned off. तो बहरहाल ये पहली पाइपलाइन थी जो पार ऑफ साइबेरिया 2 है, इसमें उन्होंने फैसला किया कि दे विल गो थ्रू मंगोलिया. अच्छा, ये देयर इज अ लेसन इन दिस फॉर अस आल्सो. ये सब मैंने जो कंसर्न्स पहले बताई वो दे वर ओवररूल्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रेड. ट्रेड कम्स फर्स्ट. तो आपकी जो भी होती हैं इसमें व्हाटएवर geopolitical considerations that you have, security considerations that you have to find a solution because you have to find a better trade route. So this is what they have done. So ये जो pipeline lay होगी, अभी it's not been laid yet. This will come via Mongolia, and this is called Power of Siberia 2. So now we come to the second one, which is New Eurasian Land Bridge. This was opened in 1990s, और this precedes the idea of Belt and Road Initiative. ठीक है. And this was opened soon after Deng Xiaoping's idea of trading with the rest of the world that began to mature. So the idea was to connect Pacific to the Atlantic. Now we are not talking of just East China with Western Europe. We are talking of a larger picture. So this is basically based on 10,000 kilometers of rail link. और ये हम पहले ने बात की थी Khorgos dry port की. ये इसमें is the linchpin. So Khorgos dry port was going to be connected. This is on the Kazakh-China border, and this was going to be connected to the Duisburg German multimodal port. आज there are 40 trains a week that are operating on this, huge network of 10,000 kilometers. 40 trains a week. 40 trains a week. And many companies, including HP, they have changed their business model. They have located their production facilities from elsewhere in China to Chongqing, because from Chongqing, their computers can be shipped more quickly towards to Europe. Right. So this is very important point. अच्छा, ये जो Malacca Strait, जब last point देख रहे हैं, Malacca Straits bypassed. जी. I think we talked about this earlier also. In 2004, President Hu Jintao talked about their Malacca dilemma. This Malacca dilemma has been there for a long, long time, but now it's openly come out as part of Chinese policy that they want to avoid the Malacca dilemma because most of their energy imports into China from the Middle East come through Malacca Straits, and a huge portion of their exports go through the Malacca Straits. And हमने पहले भी शायद बात की थी, US 7th Fleet patrols the Straits of Malacca, which is a constant thorn in the side of the Chinese. So they are looking for ways to bypass. So this land bridge, this corridor provides partial bypassing of the Straits of Malacca. So now we come to the third one. China, Central Asia, West Asia Economic Corridor. This is basically to link Xinjiang with the Persian Gulf and then with the Arabian Peninsula, and then open up to the Mediterranean. Keep in mind that China already has an investment in the Piraeus port in Greece. So इसमें the 17 countries are covered in this corridor, and again this also bypasses Malacca. But इसमें जो है ना, the key nodes here are Tehran, Riyadh, and Ankara. तो आपको याद होगा 2 साल पहले
इससे पहले तो ऑफ कोर्स तेहरान एंड रियाद were daggers drawn, but China ने much behind the scenes, China facilitated this resumption of diplomatic ties जी between Tehran and Riyadh. जी And the Americans were caught by surprise. But now it's a different world. Now I don't know what developments will take place in improvement of relations between Iran and Riyadh with President Trump in the White House. क्योंकि सर अभी रिसेंटली तो it's not looking very good in terms of Iran. Always it's a hard stance. दूसरा ये कि I'm looking at one of the ports, ये जो key node है, which is Turkey. So Turkey recently has gained a lot of attention in terms of becoming उसने ये पोर्ट्रे किया है intentions to become a very important node in the Mediterranean when it comes to energy hub. आप मुझे नाम भूल रहे हैं बट कितनी pipelines, कितने floating storage units. Recently Turkey की ship सोमालिया भी गई है to explore oil and gas projects. And Turkey is becoming Turkey ने Somalia is today a truncated country. जी So Turkey ने इनकी आपस में कुछ सुलह सफाई भी करवाई है to facilitate open trade in the Red Sea. And it's becoming मतलब उसका सारा ज़्यादा मुकाबला ग्रीस के साथ भी है, फिर इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, उनका सारा, लेकिन टर्की इज़ कमिंग आउट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें भी मुझे नज़र आ रहा है, जैसे आपने 1990 में बताया है NELB, बट इसके अंदर भी मुझे नज़र आ रहा है कि इन द फ्यूचर स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट गैस इज़ गोइंग टू बी it's easily going to replace oil in terms of its usage and primary resource जो है, because of its availability and along with that ये जो ESG concerns है ना, environmental, social and governance, उसकी वजह से. And if China is looking at Turkey in this regard, so that also tells us about their future approach, क्योंकि it is going to become an important hub. क्योंकि ये जो जोहर गैस फील्ड है ना, which is a recent discovery in Eastern Mediterranean, जी उसमें इज़राइल, पैलेस्टाइन, साइप्रस, ग्रीस, इजिप्ट, दे आर ऑल, वैसे इनकी आपस में टेंशन्स भी हैं, सब कुछ डिफरेंट, लेकिन इस मामले में वो इकट्ठा उसको डेवलप कर रहे हैं टू एक्सपोर्ट गैस टू यूरोप. बट टर्की इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस. सो टर्की इज़ नाउ लुकिंग एट लिबिया which is formerly of the Ottoman Empire. So वो अपनी वो जो लिबिया के जो resources हैं वो उनकी नज़र अब उस पे है, and they have a sizable presence in Libya today. Wow. And of course Syria also. Of course. और especially after the recent ये withdrawal जो हुआ उसके बाद काफ़ी ज़्यादा. सर अब जो and this also is bypassing Malacca Straits. ठीक है. Malacca Straits is in the forefront of Chinese strategical thinking. BRI का मतलब one of the core purpose is to bypass the Malacca Strait. Well, you can say yes. One of the principles. Oh yes, policy objective is to bypass Malacca. So जो अगला कॉरिडोर है, we were discussing before the recording, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है. देखें ये इसको before we discuss it in detail, a couple of figures are very important. चाइना की जो ट्रेड है with ASEAN countries, the grouping as you know of 10 countries. That has gone up to $975 billion and increasing at a very rapid rate. China and ASEAN are each other's two largest trading partners. अगर आप चाइना का बॉर्डर देखें तो ये जो आसियान के 10 ममालिक हैं, टिमोर लेस्टे भी अब मेंबर बन जाएगा, which will be 11 countries. This is ASEAN is one of the most successful examples of a free trade area. Yes. अच्छा, अब इसका जो बॉर्डर लगता है विद चाइना, वो लगता है म्यांमार का, लाओस का और वियतनाम का. ओके, और ये तीनों जो ममालिक हैं, दे शेयर अ बॉर्डर ओनली विद वन चाइनीज़ प्रोविंस एंड दैट इज़ यूनान प्रोविंस. सो ये जो यूनान प्रोविंस है विच इज़ इन साउथ वेस्ट ऑफ चाइना, ये हमेशा से इट वाज सॉर्ट ऑफ इन दी it was given a lot of priority in Chinese policy making. That as factors of production in the eastern seaboard of China, they get more expensive. So since their trade is with ASEAN, so they'll be moving their production facilities, their manufacturing to ASEAN. So
I'm sorry, to Yunnan province. So Yunnan has emerged as the industrial center of gravity. Okay? So जब हम बात करते थे ना पीछे अपने जब we were talking about CPEC, तो हमारा ख्याल था कि जब ये वेस्ट को मूव करेगा तो ये हम इसका बेनिफिशरी सिंकियांग होगा, एंड बिकॉज ऑफ सिंकियांग CPEC will become very important. जी. That is not so, and that was never going to be. आज जो यूनान प्रोविंस है इसका जो GDP है that's $422 billion. 422 billion. Much more than Pakistan. Yes. Xinjiang at $272 billion. You know, these numbers tell you a story. और जो यूनान का जो GDP ग्रोथ रेट है that's much higher than Xinjiang. Xinjiang की importance जो है वो mostly as a transit facility provider. ठीक है. Whereas there is production taking place in Yunnan. दूसरा बहुत important figure ये है 26% of China's exports go through are produced in Pearl River Delta region. बिल्कुल ठीक. अच्छा, अब वो Pearl River 26% of exports, so most of these exports are also going to ASEAN. If you look at the map, between Pearl River Delta, which has got Hong Kong in the east and Macau in the west, and also Shenzhen. The center, the global center is technology का वो. Yeah. Shenzhen comes in Pearl River Delta. बिल्कुल. It's Shenzhen in Pearl River Delta, also जहाँ पर आप गए थे. Guangzhou. That is also, for some reason the Chinese call this Pearl River Delta city in some of their publications, but it's really a huge region. तो ये भी जब रीजन एक्सपोर्ट करेगी तो उसका भी जो बीच में जो चाइनीज प्रोविंस आता है वो यूनान प्रोविंस है. ओके. सो यूनान प्रोविंस टुडे वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वियतनाम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ आसियान कंट्रीज. एज वी आर टॉकिंग डूइंग दिस पॉडकास्ट as a reaction to sort of the Trump tariffs, President Xi is in Vietnam for a 3-day visit. So that goes on to show the importance of ASEAN and hence the importance of this particular corridor, China Indo-China Peninsula Economic Corridor. उन्होंने बल्कि इस विज़िट में उन्होंने एक और चीज़ जो प्रूव करनी है वो है a fast train from China to the Vietnamese port of Haiphong. ये जो ट्रेन्स है ना, जो ML1 भी हमने करना था, डेवलप करना था, ये इट इज़ नॉट ओनली इम्प्रूविंग द ट्रेन. the Chinese idea is to make fast trains. They want to turn this logic on its head, that the shipping container, sending a container on a ship is the cheapest and the most efficient way of sending it. अभी तक तो है सर. अभी तक है, but they want to improve the capacity and the capability of fast trains. Okay. वो for many things, not for everything, for many things, or for some things, fast trains have become more sort of economically feasible. Wow. So इसलिए ये high speed rail जो Kunming is the capital of Yunnan. उधर से सिंगापुर तक आना, and there was some the sector between Kuala Lumpur and Singapore was not making good progress, so the Chinese are pressing the Malaysians कि आप इसको carry it forward. अगली स्लाइड पे जाने से पहले एक क्वेश्चन. अच्छा, इसमें एक ये भी है क्योकपू म्यांमार का पोर्ट. because Myanmar, like I said, is also sharing a border with China with the यूनान प्रोविंस. सर एक पॉइंट बंदा रेस कर सकता है कि अगर ठीक है यूनान तो ऑलरेडी आप कह रहे हैं इट्स प्रोग्रेसिंग, बट चाइनीज वुड नॉट वांट टू लीव सिंकियान एज वेल. मतलब अगर उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही, सो इफ मतलब इन द फ्यूचर अगर सिंकियान को, अगर नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द चाइनीज़ हिस्ट्री, अभी तो ऐसे लगता है कि वो हर एक को ग्रो करवाना चाहेंगे, तो फिर बाद में CPEC की रेलेवेंस दोबारा बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी, क्योंकि यूनान तो बढ़ ही रहा है. देखिए वो डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ विजन यू आर टेकिंग. Are you talking of the next 1 year, 5 years, 10 years? लेकिन हमारे पास मसला है ना कि the clock is ticking here. Clock is ticking. अभी मुझे तो अगले 1 साल में कि अगले कोई मुझे तो 5 साल में भी नज़र नहीं आ रहा कि ये किस तरह CPEC is going to become. You see, keep in mind 2019 में Chinese government की announcement कि of all these 6 corridors, the one that is making most progress is CPEC. This is their official announcement.
And they said कि हमारे, and this is mentioned later on, we found out that this is mentioned in the internal documents of the Chinese government, that they wanted to make Gwadar port, they wanted to make the Shenzhen Special Economic Zone the role model for Gwadar Special Economic Zone. Shenzhen today has got, their GDP is $300 billion. And this is that one small fishing village which was identified by Deng Xiaoping 40 years back, कि हमने इधर पहला अपना special economic zone बनाना है. So Chinese are very hopeful that we would replicate this in Gwadar. Doesn't look like that. Sir, अब CPEC पे आने लगे हैं, इसके बीच में एक और कॉरिडोर है जो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया. This is not very active. Not very active because में आप last point देखें ना, because of China-India disagreements and rivalry, तो वो जब तक इसको remove नहीं करेंगे तो, but जो number one point है ना, वो proposed by Xi to Modi in 2014. Xi comes to Pakistan 2013 पे कि यार ये हमारा पहाड़ों से भी ऊंची हमारी दोस्ती है और समुंदर से भी गहरी है. So ये बनेगा CPEC, हम अनाउंस कर रहे हैं. अगले साल they go to their principal rival and they propose कि आपके साथ भी हमने कॉरिडोर बनानी. Again coming back to my point, that you have to, trade is very important, that you have to look beyond your other problems and other issues and focus on trade and prosperity. Now we come to CPEC. जी. Okay, originally 62 billion was to be invested in projects connecting from Kashgar to Gwadar. ठीक है. और इसमें पार्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे. पावर था मोस्टली फॉर आवर ओन इकोनॉमिक वेलबींग. जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये ML1 भी शामिल था और उसमें आपके हाईवेज भी शामिल थे. सो इनका चाइनीज़ का, अच्छा वो एक इनके प्राइम मिनिस्टर थे ली क्यांग चाइना के. सो उस वक्त उनका व्यू ये था, डी सेड पब्लिकली दैट ये जब हम बनाएंगे CPEC तो इससे पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी आएगी एंड दिस विल कीप द पॉपुलेशन अवे फ्रॉम फंडामेंटलिज्म. जी. So that was, one of their objectives because they want stability around their border. बिल्कुल ठीक है. दूसरा उनका ख्याल ये था कि ये जब बढ़ेगा CPEC मैच्योर होगा तो this will connect 3 billion people, and they've said this publicly also, 3 billion people of Asia and Africa. And then what they had not described earlier was that we will be able to provide the rising Pakistani middle class will be a sizable market for us. Rising Pakistani middle class, yeah. अब जो CPEC slow down हुआ है तो fundamentalism has also become an issue. Yeah. वो तो भूल जाएं 3 billion people because गवादर से आगे चलना था ना, connecting with Africa and so on. So that's not happening. And right now the middle class is shrinking. And in fact the level of poverty is also gone up as a so this is not very encouraging for the Chinese. And but then again they were hoping that when this matures Malacca Strait will be bypassed. So Malacca dilemma is coming again and again. And it turns out there are multiple ways to bypass that. Yeah. And the fourth one जो आपने बताया, it may as well rival CPEC, the Indo-China Peninsula. It can be a substitute for CPEC as well. Oh, it can be. क्योंकि देखिए वो जो हम बात करते थे ना कि जिधर गवादर से काशगर तक एक गैस पाइपलाइन हो जी. मेरा अपना ख्याल है कि that was not to, everybody knew that it was not going to be happening. ठीक है. वो इसलिए कि वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था. अगर आप ये देखें ना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान पाइपलाइन, उसका जो रफली पर किलोमीटर कॉस्ट आ रही है $5.5 million है पर किलोमीटर. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई काशगर टू गवादर तो ये तो कोई $16 billion का प्रोजेक्ट बनता है. सो दिस वाज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज यू नीड यू हैव टू टेक द पाइपलाइन टू हाई पासेस लाइक गुजरात. आपको पंपिंग स्टेशन की ज़रूरत होती है, आपको पाइपलाइन स्क्रबर्स लगाने पड़ते हैं टू कीप द पाइपलाइन क्लीन. सो it was I don't think it was
never ever seriously considered. CPEC timeline देख लें. जी. अच्छा, so 2013 में C proposes CPEC and 2015 में $54 billion के प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं, जिसमें 2 प्रोजेक्ट्स गवादर and its special economic zone for $1 billion and ML1 $9.2 billion. ठीक है. ये इसमें वो फास्ट ट्रेन का कॉन्सेप्ट था. ठीक है. ये 2 स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स थे रफली $11 बिलियन के, और उसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स थे जो $54 बिलियन की हम बात कर रहे हैं. फिर उन्होंने टाइमलाइन दी 2017 में. फर्स्ट फेज़ कंप्लीशन 2020, सेकंड फेज़ 2025, थर्ड फेज़ 2030. I'd also like to read some of the announcements that our government has been making. So very recently, in February of last month, ये announcement की गई थी कि we are in phase. One of the government ministers announced that we are in phase second. He didn't say it's completed, which it was supposed to be completed by 2025. उन्होंने कहा we are now presently. अब वो है नहीं है, we don't know. 2018 में Gwadar port was inaugurated. But to date, as of a month back, only 22 ships have docked there. Okay? Inaugurate करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना. MOU साइन करना कोई इशू नहीं है. You sit on a big table and you have got flags and you sign an MOU. Inaugurate भी आप किसी स्टेज पे कोई भी चीज़ inaugurate कर दें. So 2022 में they said कि 62 billion from 54 to 62 billion हो गया. 2023 में announcement होती है कि 24 billion projects have been completed. 2024, which is last year, new Gwadar International Airport. This was a $246 million grant. Not a loan. Not a loan. There was no equity and there was no loan. No China-Pakistan partnership. They gave this money. आप एयरपोर्ट बनाए. हमने एयरपोर्ट बना के इनाग्रेट कर दिया. It has got a runway long enough to accommodate A380, Airbus A380, which is the largest aircraft in the world. In one configuration, it can accommodate close to 550 passengers. आजकल दुनिया में 4 या 5 एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं, एंड ऑन ह्यूज जो sort of मेजर ट्रंक रूट्स हैं उन पे ये हो. So I don't know why Gwadar was chosen. कि ये भी शायद एक दिन. So this is what we have to discuss in the next episode. कि इसका मकसद क्या था, and why was 4,200 acres given to this airport? And Government of Pakistan very proudly announcing कि this is our second largest airport. Or maybe this largest airport. भी जो airport है वो आप एकड़ से नहीं मेजर करते, वो रनवे, टैक्सीवेज एंड द नंबर ऑफ फ्लाइट्स कमिंग इन, उससे होता है पैसेंजर्स बीइंग अकोमोडेटेड सो ऑन. जी. सो और इसमें सर हम एक डिस्कस कर रहे थे जो ML1 का जो रैशनलाइजेशन हुई है वो भी. ML1 ओरिजिनली वाज $9.2 बिलियन, और इसमें हम पहले जो डिस्कस कर रहे थे इसको फ्रॉम पेशावर टू कराची इट वाज गोइंग टू बिकम अ फास्ट ट्रेन, बिकॉज फास्ट ट्रेन जब होगी तो फिर ही आप सोच सकते हैं कि वो इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो जस्टिफाई होगी जी. तो उसके लिए आपको फेंस भी चाहिए, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक ट्रेन चाहिए जी. फॉर दी फास्ट ट्रेन दैट आई नो ऑफ दे आर ऑल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स. फेंस चाहिए, फिर आपको ये जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं ये आपको ख़त्म करनी पड़ती हैं, अंडर पास ओवर पास आप बनाए. सो ये चीज़ें जो है ये तो they decided after so many years कि ये हमारे पास पैसे नहीं हैं. So this was cut down to $6.6 billion. अब instead of saying कि जी हमारे पास पैसे नहीं, हमने कॉस्ट कटिंग की है, हम ये बता रहे हैं to the rest of the world कि हमने rationalize किया है. We've done some deep thinking and we've come up with a more rational cost. So but speed भी कम की है साथ. हाँ, speed हो गई है थी 160 kilometers was the target of this 120. So by no definition is this going to be a high speed train, fast train. और इसका आप देखें ना इसका जो completion का period है वो gone to 9 years. पहले हमने काम करना है कराची to मुल्तान और फिर उसके बाद मुल्तान to पेशावर in the second phase. Okay.
CPEC पावर प्रोजेक्ट। इसमें देखें जो की फिगर है ना वो 8904 है। ठीक दैट है। इज़ द मेगावाट of electricity projects that is completed. ठीक है। As a result of this, our installed capacity has gone to 44,000 megawatt, whereas our capacity to transmit and distribute this electricity is only 22,000 megawatt. So that is a big constraint. So आप 44,000 पे चले गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं। If anything उसका नुकसान है, because आपने उसकी अब कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है। जो बिजली आप नहीं लेंगे वो चाइनीज़ को भी और बाकियों को आपको कैपेसिटी पेमेंट देने पड़ेंगे। और अब तक हम $17 बिलियन जो है वो इस पे हमने इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। एंड एक इसमें जो बहुत की प्रोजेक्ट है वो है 300 मेगावाट गवादर, चाइनीज़ गवादर पावर प्रोजेक्ट। वो हमने डिस्कशन कर रहे थे, वाज इट पार्ट ऑफ दिस और डिड वी डिस्कस इट अर्लियर? नहीं, हमने नहीं की सर, अभी करना। हाँ, सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना था गवादर में, जी, यू नीडेड द 300 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट एंड दैट वाज बेस्ड ऑन इम्पोर्टेड एंथ्रासाइट कोल व्हिच द चाइनीज गोइंग टू इम्पोर्ट एंड देन रन दिस पावर प्रोजेक्ट। अब जब IMF इन्वॉल्व हुआ इसमें पाकिस्तानी इकॉनमी, इसमें उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ योर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यू कैन नॉट इम्पोर्ट नहीं कर सकते ज़्यादा। ठीक है। कोल, तो आप इसको लोकल कोल पे ले जाएं। अब लोकल कोल के लिए आपके पास थर कोल है विच इज़ इन्फीरियर क्वालिटी कोल, वो लिग्नाइट कोल है। चाइनीज सेड नो वी डोंट वांट टू। हमने को इनको बताया भी कि हम तो रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक उसमें करेंगे और ले डाउन करेंगे और वो सप्लाई विल बी क्रिएटेड। लेकिन वो इट्स नॉट, द चाइनीज हैव पुट दैट ऑन होल्ड नाउ। ओके। और ऑल्सो देयर आर नाउ इंश्योरेंस प्रॉब्लम्स। दिस प्रोजेक्ट द चाइनीज हैव नॉट बीन एबल टू obtain insurance for it. Right. Because after this discussion, it is important going to next episode में कि we take a look at the future now. कि इसमें क्या होगा क्या? इसमें very quickly to bring everybody up to date. जी. I'd like to read from this. I made a note of these press statements. तो एक है एहसन इकबाल साहब ने कहा है February of 2025 में, our Minister for Planning, that no commercial analysis or operational plan was drawn up for Gwadar. This is saying in 2025. जब सेकंड फेज कंप्लीट होना। हाँ, और हम 2015 में ये लॉन्च हो गया प्रोजेक्ट। फिर वो कह रहे हैं कि जी मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं that within 6 months the plan should be drawn up. In the same month, our Prime Minister is saying that I have instructed in a cabinet meeting, he says that 60% of Pakistan's imports and exports should be through Gwadar. अगर प्लान ही नहीं है तो आप किस तरह 60%? शाहिद खान अब्बासी, our former Prime Minister, वो अब कह रहे हैं कि Gwadar is not really a port. Right. And to have a proper port with the backup of the special economic zone, you need $3 billion. So ये सब बातें हैं। और जो चाइनीज़ है वो उसके चाइनीज़ मिनिस्टर है फॉर इंटरनेशनल लाइजन, उसने स्टेटमेंट दी है कि चाइनीज़ थ्रेट्स आर दी सिक्योरिटी थ्रेट्स आर दी मेन हैजर्ड टू CPEC, एज अ रिजल्ट ऑफ विच and he also said we can deploy Chinese troops, PLA troops for security. He referred to a Chinese constitutional amendment of 2015. कि जी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है दैट वी कैन डिप्लॉय चाइनीज़ ट्रूप्स ओवरसीज। एज यू नो 2017 में फिर उन जिबूटी में, अफ्रीका में जी पहले अपनी बेस भी खोल दिए। सो दे सेड वी कैन डिप्लॉय ट्रूप्स हियर आल्सो। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि नहीं, हमने 11,000 स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फोर्स अपनी हमने रेज किया एंड वील प्रोवाइड यू सिक्योरिटी, डोंट वरी। सो दिस इज वेयर वी स्टैंड एंड सो इन द नेक्स्ट सेगमेंट आई थिंक वी नीड टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ BRI and also CPEC. Right. And we also need to have a brief discussion of whether the CPEC was not oversold to the Pakistani nation.
Okay, so that sounds like a great plan. Thank you so much for today. Once again, lots of insights, and I hope students भी इसको enjoy करेंगे. Thank you. Thank you. Thank you.